in sharpening the rhetoric against the BJP going into while Maharashtra Assembly elections is just about to take place. Congress President Mallikarjun Kharge stoked a massive row after he compared RSS and BJP to poisonous snakes, addressing a public rally in less than 48 hours before the state goes to polls. In a single phase, the Congress chief signaled out that BJP and RSS as politically dangerous for the country, adding that such poisonous snake should be squashed before they bite. The remark drew furious response from the BJP as it urged the Election Commission to act against the Congress president. Take a look at this report. In yet another illustration of the Congress's Nafrat ki Dukan, party chief Mallikarjun Kharge unleashed a foul-mouthed rant against the BJP and the RSS. Addressing a rally at Sangli in poll-bound Maharashtra, Kharge singled out the BJP and its ideological mentor as politically dangerous for the country. Not stopping at that, the Congress chief likened them to a poisonous snake which should be eliminated before they bite someone. The BJP lost little time to strike back at the Congress, saying those filled with poison can only spread hate. The BJP also urged the Election Commission to act against the Congress president. नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना, मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं और अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पॉइजनस स्नेक बताकर हिंसा का उपयोग चुनाव में करना चाहते हैं। उनकी जो मानसिकता है वो नजर आती है। हम इस प्रकार की जो मेंटालिटी है उसको क्रश कर देंगे। इस मेंटालिटी ने ही देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस सिर्फ चंद वोट बैंकों के कारण से इस प्रकार की बातें कर रही है। Now you are crossing all limits where you are saying people to crush BJP and RSS and provoking them to go violent. This is not done in during election courts, and this is not done in any election process, any democracy also. We'll appreciate Election Commission will immediately take cognizance and take the needful action. This is not the first time that the Congress and its India allies have resorted to hate politics in an election cycle. जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। With furious exchanges and brazen hate speeches taking center stage as the campaign closes, Maharashtra is headed for arguably its most polarized elections ever.